Well, let's get you the latest on the ugly and dramatic incident that took place overnight at the wrestlers' protest in Delhi. Ace wrestlers who were holding a protest at Delhi's Jantar Mantar have now alleged that a group of drunk Delhi police personnel targeted them late in the evening when they wanted to bring in mattresses and beds to sleep at night after the day-long rains in Delhi. That's right, absolutely shocking visuals there. The policemen allegedly beat them up and abused the women wrestlers. That's what was alleged by the wrestlers. Several grapplers were hit on the head and two of them sustained injuries even. One person who fell unconscious had to be taken to the hospital. In an official statement, the Delhi police, however, said a minor altercation took place in which Aam Aadmi Party leader Somnath Bharti, along with two others, was detained. He was apparently getting beds for the wrestlers to sleep at night, given the rain that took place in Delhi. That's right. In fact, the wrestlers have been protesting for over 10 days, and there's a second round of protests. However, such violence is the first for Jantar Mantar, the designated protest site of the national capital. Right, and Congress leader Dipinder Hooda was also prevented by the police from arriving at the spot. There you can see the visuals showing that the wrestlers are arguing with the cops, many on camera, and the policemen who allegedly targeted them. One of the wrestlers even fainted, and one who was injured is identified as Rahul Rao. Vinesh Fogart hit out at the violence. After that, the wrestlers spoke out against what took place. ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आने, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं आप लोग के साथ? दो को, एक को तो इधर से फटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी हमने भगा दिया। इस भाई को, ये भाई बैठा हुआ है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। गद्दे पे हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि लेके आओ, आज ये सब गिल्ले हो गए। कहाँ पे सोए? आप लोग हमें जवाब दे दो, कहाँ पे सोए हम? जिन पुलिस कर्मियों ने आपके साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ शिकायत देंगे आप लिखित में भी? हम तैयार है मरने के लिए, हम बिल्कुल तैयार है। आरोपी को ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, औरतों की इज्जत ना हो, हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी भाई। उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं, और ये यहाँ पे ऐसे रोड़ा पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है, सुबह तक दिल्ली पहुँच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। ये जो जंतर मंतर पर अभी हुआ है, ये बहुत गलत है। पूरे दिन आज बारिश हुई, जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी देश की पहलवान, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पूरी दुनिया में तिरंगे को ऊंचा किया, आज बारिश होने के बाद अगर जंतर मंतर पर कीचड़ है तो पुलिस कह रही है कि आप कीचड़ में सोइए। हमारे घरों की बहन बेटियां बीच सड़क पर कीचड़ में कैसे सो सकती हैं? किसकी बहन बेटियां कीचड़ में सो सकती हैं? Well, let's go across to NDTV's Vimal, who joins us from Jantar Mantar. Vimal, what is the situation this morning, and very disturbing scenes that took place last night? Terrible to see, the wrestlers in tears. Yeah, you can see, the police has cordoned the whole area and is completely sealed off. And from 200 meters from here, the wrestlers are protesting, and you can see the heavy deployment of police. I would say that police is doing what they should have done much earlier. And of course, there is
there is a security concern, and I'm joined by Ravish Ranjan Shukla also, who has been covering the restless protest. Ravish, कल हम लोग रात में इससे बातचीत कर रहे थे और आप भी लगातार इस पे खबर कर रहे थे। कल भी आप जब पीटी उषा आई वहाँ पे थे। आपको लगता है सिक्योरिटी सिस्टम, कल आपके जो सोमनाथ भारती हैं उन्होंने बयान भी दिया कि वो कॉट लेकर आए थे और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की थी और ये अलाउड नहीं था। एक जो बयान मेरी जो बजरंग से बातचीत, बजरंग ने जो बयान दिया कि वो अलग सोर्सेस से कॉट लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम जो होना चाहिए था वो नहीं रहा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिस्टम में, सुरक्षा में खामी रह गई, जिसकी वजह से इस तरीके की शर्मनाक तस्वीर हमको देखनी पड़ी। लेकिन कल विमल जी दिन भर बारिश हुई थी और हमने देखा था खुद की तंबू जो उनका था, हाँ वो भी भीग गया था, नीचे जहाँ वो भी भीग गया था। तो उनको एक ज़रूरत थी, कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आपस में बातचीत करके पहले ही एक व्यवस्था अरेंजमेंट करना चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से, पहलवानों के तो अपने बयान है, अपने आरोप है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब परमिशन दी जाती है तो बाकायदा क्या सामान आना है क्या नहीं, उसको सिक्योरिटी चेक किया जाता है। तो कल जब अचानक एकदम से इतनी सारी खाट यहाँ पर आने लगी, हाँ, तो पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने सिक्योरिटी एक चेकअप के लिए पूछताछ की और उसी में जो है वो आपस में झगड़ा हो गया। और उस दौरान झड़प भी हुई है, एक दो पहलवान को चोटें, हाँ बिल्कुल, बहुत तीखी बहस हुई, उसके बाद में धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में इस तरीके का जो बैरिकेड लगा है उसमें एक सर टकराया एक पहलवान का और उसके बाद चोट लग गई, एक दूसरे शख्स को भी चोट लगी है। तो अब देखना होगा, आज चूंकि आज सुबह से तमाम सारे सियासी नेताओं के बयान आए हैं, जयंत चौधरी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और भी तमाम सारे नेताओं ने कहा है कि वो पहलवानों को देखने के लिए आएंगे। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जंतर मंतर पर इतनी दूर हम लोगों को खड़ा बिल्कुल। आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी, रविश आपने किसान आंदोलन भी कवर किया है और वहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा लोग थे। आपको नहीं लगता है कि जो इतने कम पहलवान हैं, इस तरह का मसला अगर आप पहले चाहते हैं और आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो ये पहले रोका जा सकता था? बिल्कुल पहले रोका जा सकता था कहीं ना कहीं। और रात के वक्त जंतर मंतर पर वैसे भी अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजली का बंदोबस्त नहीं है। कल हमने देखा कि लाइट भी शॉर्ट सर्किट की वजह से चली गई थी। तो पुलिस को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि और ज़्यादा, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि आप इनकी सुरक्षा को मजबूत करिए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी खामी है और इस तरीके का वाकया नहीं होना चाहिए कि पहलवान सड़क पर रोते हुए दिखें कि उनके साथ में बदतमीजी हो रही है। निश्चित तौर पर पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की वो जांच भी करेंगे कि आखिर इसमें कहाँ पर दिक्कत रह गई और अगर कोई इसमें दोषी है तो उसके ऊपर में कार्रवाई भी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है कि राजधानी की सड़क पर इस तरीके से, जब आप यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहती है, दिल्ली पुलिस भी रहती है, 2 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है और ऐसे में ये वाकया जो है वो होना पहलवानों के साथ में बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल अफसोसनाक है। और आसपास जितने हैं मीडिया वाले हैं यहाँ पे, ये जो मीडिया की ही भीड़ है यहाँ पे, और दोज द रेसलर्स आर नॉट simple wrestlers, they are Olympic medal winners and world championship medal winners. You cannot treat these players like that. I mean, the truth. Right, Vimal, also just to explain to viewers who might not be in Delhi, yesterday there was heavy rainfall in Delhi. It was muddy, the streets were full of water, and because of that these arrangements were being made by the Aam Aadmi Party. Yes, perhaps it should have been better coordinated, but it was for the sake of the wrestlers who are sleeping on the road. They couldn't be expected to sleep in the mud, isn't it? You can say in that terms. I mean, this was a complete kind of failure, but and wrestlers crying on camera is not really a good picture of Indian sport. I mean, being displayed all over the world. All right, Vimal, thank you so much for that. And as Vimal was also pointing out, that Jantar Mantar is a designated spot for protests in the national capital, and such unruly scenes unfolding for the first time at Jantar Mantar in many years. Our colleagues Saurabh Shukla and Tanish Punjabi were on the ground yesterday when all these scenes were unfolding. Let's actually listen in to Saurabh Shukla's interview with Bajrang Punia. देखिए, अगर देश के लिए मेडल जीतने के बाद और देश की बेटियों के साथ अगर ऐसे ही बदतमीजी होती रही है तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं सभी देशवासियों से ये बोल रहा हूँ कि एकजुट हो जाइए। बड़ा बुरा समा रहा है खेल के लिए भी और भारत की बेटियों के लिए भी। जिसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है उसको तो कुछ कर नहीं रहे और उल्टा खिलाड़ियों को ऐसे देखो कैसे लेके जा रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए उनको, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये देख लीजिए, एक हॉस्पिटल में पहले ही लेके जा चुके हैं। क्रिमिनल हम हैं
या ब्रिजभूषण है। ये पुलिस वालों का ये एक प्रोपगंडा है कि इस धरने को हम खराब कैसे करें, ब्रिजभूषण को हम कैसे बचाएं। ठीक है, अब ये पुलिस बोल रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, पुलिस ये बोल रही है, आप लोग बोल रहे हैं कि फोल्डिंग आप लोगों ने मंगवाई थी क्योंकि बारिश में आप लोगों का गद्दे सारे गीले हो गए थे, लेकिन वो उनका कहना है कि सोमनाथ भारती फोल्डिंग लेकर के आए थे। देखिए वही मैंने बोला, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उसको बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। वो तो पहले ही खड़े थे यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ही। मैं तो यहाँ से वॉकिंग कर रहा था तब मैंने देखा था, और मैं तो उधर, और टेम्पो वाला तो 10-15-20 मिनट बाद आया है। कितने एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं देखा, पर 15-20 मिनट बाद आया वो आदमी, और टेम्पो वाला उधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, तो वो लेके आ रहा है। फोल्डिंग आप लोगों ने मंगवाई थी? हमने मंगवाया है। और कितने पुलिस वालों ने मारपीट की है? शराब कितने पुलिस वालों ने पी हुई थी? शराब पी रखी थी। एक उसका कांस्टेबल का क्या नाम था, हरीश बेराने ऐसा नाम था, हरीश क्या, और एक धर्मेंद्र था, वीडियो में है। शराब पी हुई थी उन्होंने शराब पी, और धर्मेंद्र ने लड़कियों के साथ बदतमीजी भी की, विनेश के साथ भी बदतमीजी की, उसने गाली दी है बहन की। ये बताइए, ये पुलिस प्रशासन जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए उस पे तो ये कर नहीं पा रहा। मैं ब्रिजभूषण कल था, ब्रिजभूषण क्या इंटरव्यू करने गया था मैं गोंडा, वो कह रहा है कि नहीं, ये जो सारे पहलवान हैं ये राजनेता होकर चुनाव लड़ेंगे, सब ऐसा कहना है। उन्हें सारे सवाल पूछे उनसे कि अब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो। महिलाओं को बहुत करेज होता है, बहुत हिम्मत लगती है कहने के लिए आके सामने समाज के कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। सारे सवाल पूछे हमने, पर वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक मोहरा बन गए हैं, राजनेता आप लोग जाके आगे पॉलिटिशियन बनेंगे, इन्होंने कहा। ये पहले ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के साथ है ब्रिजभूषण, आज पुलिस बोल रही है आम आदमी पार्टी के साथ है। पहले वो डिसाइड कर ले वो किसके साथ हैं। हम देश की बेटियों के साथ हैं। आप मेडल लाए और एक मेडलिस्ट के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं, और जो रात में हुआ बहुत तकलीफ होती होगी। उन मेडलों को मैं गुजारिश करूँगा भारत सरकार से, आप वापस ले लीजिए। ऐसे मेडल नहीं चाहिए जो देश में ये इज्जत मिलती है। ऐसे मेडलों का क्या करना है जब देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं, ये हमारी रिस्पेक्ट है। और जो क्रिमिनल है वो खुला घूम रहा है। अगर ऐसी रिस्पेक्ट है तो आप वो मेडल मैं वापस लौटा दूंगा भारत सरकार को, जो उन्होंने अवार्ड दिया मैं वापस लौटा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? आप देखते होंगे जब मेडल लेके आए बजरंग, भावुक हो गए बजरंग, रो रहे हैं। जब मेडल लेकर के आए और जब राष्ट्रगान बजता है और वो हमारा तिरंगा झंडा ऊपर जाता है, तो सारे भारतीय अपने जाति धर्म सबका जो मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं हिंदुस्तानी। वो गर्व का क्षण देने वाला बजरंग पुनिया भावुक है। और जो वाकई जो जंतर मंतर पे हुआ, पहलवानों को चोट लगी, आपने देखा कि इस पहलवान को कैसे ले जाया गया है। काफी भावुक हैं बजरंग। शुक्रिया बजरंग। और आपने सुना बजरंग को, ये तस्वीरें हैं, ये हकीकत है कि हमने बताया किस तरीके से क्या हुआ। हमने घायल पहलवान दिखाया आपको, बताया किस तरीके से यहाँ पर पहलवान को ले जाया गया अभी एम्बुलेंस में ले जा करके। और फिलहाल तमाम जो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हों, सब यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर सील है, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बजरंग भावुक रोते हुए नजर आए, दिनेश संगीतन रोते हुए नजर आए। फिलहाल अब आगे क्या होगा, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है क्योंकि हमने दिखाया है तस्वीरें। एक पहलवान जो दुष्यंत हैं उनको तो अस्पताल ले जाया गया है। दूसरे पहलवान राहुल जो घायल होकर नीचे गिर गए थे, उनको काफी चोट लगी है। वो जेल में, उनको यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ पुलिस आई है और काफी मुश्किल हो गया है। एम्बुलेंस पहुंची है। देखिए यहाँ पर एक जो तस्वीर है, राहुल जो हैं वो आपको तस्वीर में दिखाएंगे। ये राहुल हैं जिनको यहाँ पर जिनको चोट लगी है, सर फटा हुआ है, वो बेहोश पड़े हुए हैं। उनको हम बजरंग से बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको जमीन पर नजर आ रहे होंगे, राहुल है पहलवान, और जंतर मंतर पर इनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस ले जाए गए। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बजरंग आपको नजर आ रहे होंगे, बजरंग पुनिया जो यहाँ पर हैं। जो घायल पहलवान है उनको लेने के लिए पुलिस पहुंची हुई है और उनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। फिर इनको यहाँ पर
एम्बुलेंस से लेके जाया जाएगा। पुलिस एम्बुलेंस लेकर के आई है, तो काफी गहमा गहमी है यहाँ पर। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक पहलवान, ऐसे तस्वीरें हैं काफी चिंताजनक तस्वीरें। सर फटा हुआ है, एक डीप कट है सर पे, हमने भी देखा है। उस डीप कट में खून भी निकल रहा था। तब से ये पिछले 1 घंटे से ये पहलवान जमीन पर घायल पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। और 1 घंटे बाद अभी एम्बुलेंस पहुंची है, वो भी यहाँ तक आई नहीं है। ये प्राथमिक उपचार अभी दिया जा रहा है यहाँ पर, वो भी पहलवान ही दे रहे हैं, एम्बुलेंस लेकर के आए हैं। 1 घंटे से पहलवान है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, सर पे एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ है, सर फटा हुआ है और स्थिति काफी गंभीर है। ये वाकई में चिंताजनक तस्वीरें हैं जंतर मंतर पर, जहां पहलवान लगातार यहां पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए तस्वीरों में दिखाते हैं आपको, ये खून देखिए, ये देखिए, ये तमाम जो है, और ये तस्वीरों में देखिए पट्टी लगाई जा रही है। ये पहलवान है, थोड़ा आप इधर आ जाइए, तस्वीरें देखने दीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए, तस्वीरें देखने दीजिए। ये राहुल हैं और इनको चोट लगी है, इनके सर पर पट्टी बांधी है और पिछले 1 घंटे से ज्यादा से यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। एम्बुलेंस अभी आई है और अभी भी एम्बुलेंस इनको ले नहीं जा रही है। तो ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं इस वक्त जो हम आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। और काफ़ी मुश्किल है। महिला पहलवानों का कहना है कि उनके गद्दे गीले हो गए थे, इसलिए लेटने के लिए उन्हें फोल्डिंग मंगवाई थी। और फोल्डिंग जब मंगवाई तो यहाँ पर शराब पी करके कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने मारपीट करी और मारपीट करने के बाद सर फाड़ दिया। यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है और एम्बुलेंस से यहाँ पर जो घायल पहलवान है उसको ले जाया जाएगा। तो फिलहाल काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से यहाँ पर ये पहलवान घायल पड़ा हुआ है, बेहोश। राहुल नाम है इनका। 2 पहलवान घायल हुए, दुष्यंत, फोगाट और राहुल। All right, so Saurabh Shukla, they're reporting those scenes last night, very ugly scenes this morning as we saw Jantar Mantar, a huge amount of police personnel there, but the wrestlers, as you can see, very, very upset, 2 wrestlers even injured in that scuffle. There you can see the kind of security that is now in place. So there you can see a heavy police deployment, not just the Delhi police but also paramilitary forces have been deployed there at Jantar Mantar, and the media is not being allowed to go beyond that particular layer of barricading to the protest site. And as our colleagues have been reporting that just 200 meters away from these barricades is where the wrestlers are protesting currently. And in fact what we are also being told is that Sakshi Malik has reached Jantar Mantar. And now today all eyes of course on that Supreme Court hearing. What lies ahead for these wrestlers, these elite wrestlers protesting in the national capital remains to be seen. Time for us to slip into a short break, and on the other side we'll get you the latest from Manipur, where internet is suspended and gatherings have been banned. Stay with us. Welcome back. Now let's get you the latest from Manipur, where various tribal groups have been protesting, and now mobile internet has been suspended along with ban on large gatherings. A night curfew has also been imposed in several districts of Manipur, and the Manipur government has suspended mobile internet for the next 5 days in order to tackle the worsening situation. This after tribal groups took out rallies yesterday in several districts of the state. There was also arson, there was also violence, along with the ban on large gatherings, as we said, night curfew. And this comes close on the heels of trouble in Churachandpur district, and thousands of people had turned up for the tribal solidarity march. Now, what has led to this anger among the tribal community is that they are opposing the demand for inclusion of the Methi community in the ST category as ordered by the High Court. That's right. For the latest, let's go across to our colleague Ratnadeep, who's tracking all the latest for us. Ratnadeep, now the High Court has sent notices to several tribal leaders, and they say that these tribal leaders have instigated innocent people against the judgment of the High Court. Tell us about that, and what's the latest on the ground? Well, the High Court has sent basically notices to tribal leaders, particularly what we have been told by
High Court sources that notices have been sent to the chairman of the Hill Committee, which is of the Assembly. So remember, all the 20 tribal reserve seats which are there in Manipur out of 60. So all the MLAs are part of the the Hill Committee. So Hill Area Committee, and their chairman has been served a notice, as well as the president of ASUM, the student body, the All Tribal Students Union of Manipur, which actually called for the solidarity march which took place yesterday against the High Court order to allow the state government to consider the majority community, the Métis, to be included in the scheduled tribe list. But what we can add here is that this morning the situation remains very tense, and although the state government claims under control, now there is total curfew in as many as 8 districts of Manipur. So we can say that at least half of Manipur at this moment as we speak is under prohibitory orders of Section 144 of CRPC, as well as curfew. There is massive presence of security forces. Yesterday, this solidarity march was called by ASUM, and then several other tribal groups joined it. Initially, the march was peaceful, and what we picked up from our sources is that it was only after the fag end of the march in different districts, particularly in Churachandpur and Kankopi. In this area, there were scuffles which happened, and then overnight, there have been several videos of arson as well as vandalism, as well as pitch battles between communities which have surfaced. In fact, what has happened is in areas which are bordering areas to the areas the hill areas which border the Imphal Valley as well as its surrounding areas. These are the areas where these scuffles have taken place, and therefore what the state police told us that they have rushed in additional forces to this area. But remember, this comes close on the heels of last week's trouble in Churachandpur district, where there were vandalism and arson of a venue where the chief minister was supposed to hold a program next day, and at that point of time the tribal groups have been agitating against state government's recent eviction drive in areas which are covered under as forest land. So there has been for some time confrontation and displeasure among the tribal groups with various decisions of the state government, particularly in terms of first that the state government actually went forward to start an eviction drive in certain areas which the state government says that were part of forest land as well as reserve forest and wetlands. Right. And tribal people were residing there. The state government then went forward to decide to withdraw from the ceasefire agreement with some of the tribal underground groups. This was another reason why the tribal community got meets with the state government. And right. So once again, we're seeing this sort of violence and tension taking place in Manipur, and today all internet services have been suspended for 5 days and a ban on large gatherings. Hopefully, the situation will calm down somewhat today. Well, let's switch focus now and focus on Goa, where Russia Foreign Minister Sergei Lavrov has arrived for the SCO Foreign Ministers meeting. He arrived this morning, and his visit, though, of course, comes at a very interesting juncture, less than 24 hours after Moscow accused Ukraine of an assassination bid on President Putin. That's right. So there you can see visuals of Lavrov arriving here. In fact, External Affairs Minister will be meeting Lavrov and King Gang, his Chinese counterpart, for a one-on-one meeting ahead of the SCO meeting. In fact, Maha is joining us on the broadcast. Maha, so this meeting, of course, comes at a very interesting time, given the fact that it comes just hours after what Russia called an assassination attempt on Putin. So is that going to cast a shadow, of course, on this particular meeting? How significant is it otherwise?
Vedant, certainly this issue is going to come up during the bilateral meeting between S. Jaishankar and Sergei Lavrov, which is slated to be held this afternoon at around 3 p.m. This entire bilateral meeting becomes significant, not just because India and Russia share good ties and they will be discussing a gamut of related issues between the two countries, but also because of the regional and global geopolitical situation. At this juncture, India is not just the chair of the SCO, but also the president of G20. So for India, it needs to continue its dialogue with Russia and with the Western countries. Today, Russia will put across its message to India, and therefore the backdrop of the claim that has been made by Kremlin that there was an assassination bid on President Vladimir Putin will certainly come up, because Russia at the moment, as per White House, has been suffering reverses. White House claims that a report there in fact claims that about 20,000 of their soldiers have died in the Ukraine war. There was a pullback of their Russia Day celebrations as well, which are going to be held on the 9th of May. Vedant and Gargi, those celebrations, we are being told, had already been curtailed slightly from what we generally see every year in Moscow. So in that backdrop, Russia, which does not want issues related to Ukraine war be discussed on a platform like G20, because they say G20 is a platform to discuss macroeconomic, global economic issues, and the Ukraine war shouldn't factor there. Will that stand change? Will they want perhaps this issue discussed now, but in a different way from what the West does? All those issues perhaps are going to come up during the conversation with S. Jaishankar today. There's also going to be a meeting with the Chinese Foreign Minister Qin Gang. This is the second time that S. Jaishankar will be meeting him. He met him in March on the sidelines of the G20 Foreign Ministers meeting as well. Let's quickly take a look now at what else shall we be expecting today from Goa. India's External Affairs Minister S. Jaishankar landing in Goa to host the foreign ministers of the Shanghai Cooperation Organization, or the SCO. The meeting, to be held in Benalem in Goa, will build the ground for the crucial summit in July. A summit of the Eurasian Security Group with anti-West countries like China and Russia. This year being helmed by India just months before the G20 summit in September, where the West tries to call the shots. But amidst the larger multilateral agenda, the focus will be on one-on-one meetings that Jaishankar holds, or rather not holds. But as per sources, there is unlikely to be a structured bilateral meeting with the Pakistani counterpart Bilawal Bhutto Zardari. Here's why. India had taken a stand after the Uri terror attack that terror and talks won't go together. The situation hasn't changed much, especially with the recent Poonch terror attack in which India lost 5 of its Jawans. It is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. However, despite the Eastern Ladakh friction entering the 3rd year and India having lost 20 soldiers in Galwan clashes in June 2020, the doors of communication remain open at the foreign ministers level with China. S. Jaishankar will meet his counterpart Qin Gang on Thursday. India is once again expected to communicate that the overall bilateral relationship remains adversely impacted due to the border situation. External Affairs Minister S. Jaishankar will also hold bilateral talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov. This one-on-one conversation is very significant in the backdrop of the continued war in Ukraine and with the latest development of what Kremlin claims to be an assassination bid on Russian President Vladimir Putin. India does not only hold the chair of the SCO, but is also the president of the G20 this year, and therefore engaging with Russia on the one side and the Western countries on the other is very critical for India to be able to strike a consensus and make its presidency a success.
With camera person Rajendra Dayalkar, this is Maha Siddiqui in Goa for NDTV.